Welcome everyone. Today we are diving into one of 2025's most exciting IPO stories, the success of Peyush Bansal and Lenskart. From humble beginnings to a nearly 70,000 crore valuation, this is a milestone for Indian startups and entrepreneurship. सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और जो पहली बार आए उन्हीं का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कहाँ से प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा और मेरा जो आज का जो टॉपिक है पीयूष बंसल के आईपीओ के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बातें करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरा लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीमिंग है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं ऐसे ही टॉपिक, नए नए टॉपिक के ऊपर बातें करता रहूँगा। कभी कभी आपका मोस्टली स्टॉक मार्केट, बिजनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर हम बातें करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे गाइस। कौन है हमारे साथ? आइए आइए आइए। हेलो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के ऊपर थोड़ा बातें करते हैं। सो पीयूष बंसल का जर्नी के बारे में बात करते हैं। पीयूष बंसल फाउंडेड लेंसकार्ट इन 2010 after returning from Microsoft. His vision was to revolutionize eyewear retail in India through technology and accessibility. Despite early skepticism, Lenskart grew, fueled by innovation and customer trust. IPO highlights: the Lenskart IPO opened in late October 2025 and closed with an impressive 28x oversubscription, valued close to 70,000 crore. It raised over 7,000 crore, backed by investors like SoftBank and KKR. Piyush Bansal's stake post IPO is worth over 6,900 crore. Then what are the market mood and future vision for Lenskart? CEO Piyush Bansal calls it a day zero, emphasizing this is not an exit but a fresh start to expand reach, especially in smaller towns and newer markets. The focus on AI-powered eyewear technology and smart glasses. नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं पीयूष बंसल का आईपीओ का जो आया था हमारा लेंसकार्ट के बारे में, तो उसके ऊपर प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। Glasses by Lenskart shows ambitious plan ahead. So Lenskart IPO offers countless possibilities for India's tech startup ecosystem, inspiring entrepreneurs and investors alike. It also spotlights the growing role of homegrown brand on the global stage. Stay connected for more updates. So मेरे साथ बने रहिए जो पहली बार आए। सो थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू पहले बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा और डिटेल पे जाएंगे आईपीओ के बारे में। सो लेंसकार्ट वाज फाउंडेड इन 2010 बाय पीयूष बंसल along with the co-founders नेहा बंसल, अमित चौधरी and सुमित कपाही. It began as an online eyewear retailer aiming to make quality eyewear affordable and accessible in India. The first offline store was opened in 2013, marking Lenskart's entry in omnichannel retail. Lenskart transformed India's fragmented eyewear market dominated by unorganized players. It introduced innovative try at home and AI driven frame selection technology. Annual lens production reaches around 30 to 40 million lenses. कितना बड़ा है आप सोच लो, एक साल पे उनका जो प्रोडक्शन होता है 30 टू 40 मिलियन लेंस वो मतलब फैक्ट्री से निकलता है। 25 मिलियन फ्रेम्स आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। फ्रेम है 25 मिलियंस और इनकी जो लेंसेस है 30 टू 40 मिलियन लेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फैक्ट्री से निकलता है इनका हर साल। Lenskart owns manufacturing capabilities, producing the majority of its eyewear in house. Uh, the company expanded internationally, acquiring Japanese eyewear brand Owndays in 2022 for $400 million. So उन्होंने eyewear brand, जापान का एक eyewear brand है दैट्स कॉल्ड Owndays, उन्होंने उसको एक्वायर किया था 2022 पे, दैट्स फॉर $400 million. It also acquired France Lee Petit Luton brand, signaling ambitions in global markets. Lenskart operates over 2,500 physical retail stores across India presently.
अभी चलते हैं आईपीओ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लेंसकार्ट आईपीओ ओपनड October 31st, 2025 and closed on November 4th, 2025. The IPO raised approximately 7,278 crore, that is approximately $1 billion. The IPO included a fresh issue of 2,150 crore and an offer for sale, that is called OFS, amounting to roughly 5,128 crore. The price band was 382 to 402 per share. The IPO was listed on both BSE and NSE on November 10, 2025. Institutional investors showed high demand, leading to rapid subscription and oversubscription of approx 2x. The company was valued nearly 70,000 crore, one of India's high startup IPO valuation. Uh, Lenskart IPO was among the largest ever of an Indian consumer tech company. SoftBank, Tamsek, Kedar Capital and Finlity were major pre-IPO investors and also sold shares. IPO subscription saw enthusiastic participation from retail investors with 10 crore bid registered. तो इसका जो फाइनेंशियल के ऊपर थोड़ा बातें कर लेते हैं। सो आई जो लेंसकार्ट का आईपीओ सॉरी लेंसकार्ट का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ 3,788 करोड़ इन FY23, मतलब 2023 से 2024 के अंदर उनका रेवेन्यू हुआ था 3,788 करोड़ टू 5,427 करोड़ इन FY24, दैट इज 2024 से 2025 मार्च एंड तक था ये, ठीक है। सो रेवेन्यू फर्दर रोज टू 6,652 करोड़ इन FY25, शोइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो अभी जो चल रहा है Q1 Q2 गया, तो अभी तक उनका 6,652 करोड़ का अभी रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है। Lenskart posted a standalone net profit of 144 crore in FY24 and increase from 137 crore in FY23. FY24 reported a net profit of 297 crore, reflecting strong financial turnaround. Q1 FY26 net profit was 61 crore, showing continued positive momentum. EBITDA, EBITDA, so earning before interest tax depreciation, margin more than double from 403 crore in FY23 to 856 crore in FY24. ये अभी मैं बात कर रहा हूँ उनका लेंसकार्ट का जो फाइनेंस है उसके ऊपर बातें कर रहा हूँ मैं। लेंसकार्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नेट लॉसेस by 84% between FY23 to FY24. Latest financial data suggest growing operational efficiency in scaling production. Net asset value (NAV) per share was estimated around 36.43 for FY25. The company's price to earning ratio initially raised discussion around valuation sustainability. So पीयूष बंसल का स्टोरी ऑफ विजन क्या है लेंसकार्ट को लेके? So Peyush Bansal returned from working at Microsoft to start Lenskart with a vision to disrupt eyewear. He leveraged AI and machine learning to personalize eyewear choices for customer. Bansal viewed the IPO as the day zero for a new beginning rather than an exit. He emphasized Lenskart technology-driven approach as a competitive moat. Peyush has promoted expansion into smaller towns and rural areas in India. He retained around 8.8% stake post IPO valued at 6,900 crore. He sold shares worth 824 crore to diversify his holdings post listing. Bansal is recognized as the visionary entrepreneur driving India's D2C boom in tech retail. Lenskart has planned innovations like B by Lenskart, smart eyewear integrating AI. Piyush promotes a culture of innovation, quality and customer centricity internally. So, what are the market and investor reaction to this? Lenskart IPO show oversubscription indicating strong investor confidence. Grey market premium spiked to over 20%, signaling enthusiasm, but later, due to valuation concern, analysts noted valuation concerns given high price to sales ratios, but acknowledged growth potential. Veteran investors like Shankar Sharma defended the IPO's pricing as fair compared to peers. Institutional buying was robust from global players like SoftBank and Tamsek pre-IPO. Indian retail investors were attracted by the brand's growth story and visionary leadership. The IPO positioned Lenskart alongside other billion-dollar
Indian tech startups. Lenskart face competition from organized players but differentiates via technology vertically integrated model. Discussions highlighted India's growing eyewear market opportunity valued at over $4 billion. The IPO was seen as a test case for valuation benchmarks in Indian consumer tech sectors. So उनका growth and expansion plans क्या है? IPO proceeds earmarked for opening new stores in India and overseas market. Expansion focus includes tier 2, tier 3 cities to tap unmet eyewear demand. Plans include further inorganic growth via acquisitions to increase global presence. Investment will also go towards R&D and AI capabilities and smart eyewear technology. Increasing Lenskart's private label portfolio is a key strategy. Strengthening supply chain and digital infrastructure is prioritized post listing. Marketing and brand building to enhance customer acquisition nationwide. Focus on sustainability and eco-friendly product lines envisioned for future growth. Lenskart aims to penetrate untapped international markets beyond Japan and France. Long-term vision includes integrating health tech features for eye care monitoring. सो उनका जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या-क्या इन्वॉल्व्ड है, एआई पावर्ड वर्चुअली ट्राई ऑन एनहांसेस कस्टमर एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन, इन्वेस्टमेंट इन क्लाउड infrastructure supports website scalability and data analytics, uses of machine learning for inventory and demand forecasting reduces waste, development of smart classes with augmented reality features underway, adoption of ERP and CRM solutions to streamline operations, innovating lens technology for UV protection and blue light filtering, experimenting with new materials and frameless design uh, patterns, extensive data driven marketing tailors offers reason wise to maximize conversation. Digital platforms powered by in-house engineering talent constitute competitive strength. Integration of user reviews and feedback loops improve product design. सो इसमें चैलेंजेस एंड इंडस्ट्री लैंडस्केप क्या होगा, इसका थोड़ा उसके ऊपर ही बातें करते हैं. सो हाई PE ratio invite investor scrutiny on profitability viability. Intense competition from important brands and unorganized sectors remain prevalent. Supply chain disruptions risk affecting consistent product availability. A regulatory environment evolving regarding tech-enabled product safety and health claims. Need to sustain innovation pace as consumer preferences rapidly evolve. Balancing expansion with maintaining quality and customer satisfaction is critical. Economic volatility and inflation could impact discretionary spending on eyewear. Managing international operations and complying with different market norms. Maintaining investor confidence through transparent financial reporting and growth guidance. Continued investment needed in brand loyalty in a high fragmented market. सो इसका सोशल इम्पैक्ट एंड ब्रांडिंग पे क्या हुआ होगा. लेंसकार्ट हैज पॉपुलराइज्ड अफोर्डेबल आईवेयर, helping health accessibility, created thousands of skilled jobs, particularly in retail and manufacturing sectors, promoting eyewear awareness campaigns nationwide. Young startup culture inspires Indian tech entrepreneurship community. Strong brand recall and customer advocacy among millennial and Gen Z demographics. Seen as a Make in India success story, blending technology and traditional retail. Supported social initiatives to provide eyewear to eyewear to underserved communities. Enhanced online to offline model boost India D2C ecosystem growth. Partners with celebrities and influencers to amplify brand visibility. Inspiring example for women entrepreneurs via leadership of co-founder नेहा बंसल. तो ये पूरा स्टोरी था हमारा पीयूष बंसल और उनकी वाइफ नेहा बंसल का, जो उन्होंने लेंसकार्ट बनाया, स्टार्टअप बनाया, उसका ग्रोथ किया, उसका आईपीओ किया, उसके बाद वहाँ से उन्होंने शेयर बेचे और पूरा तो एग्जिट नहीं हुए, बट ही सेड इट्स ए डे जीरो. अभी भी ग्रोथ करना है और बहुत सारे इनोवेशंस लाना है, एआई लाना है, मशीन लर्निंग लाना है, उसके ऊपर ग्रोथ करना है और उनका और भी जो टियर 2 टियर 3 सिटी है वहाँ भी ग्रो करना है. तो दिस इज हिज प्लान एंड ही विल बी डूइंग इट, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें अभी रोड मैप पे हैं. सो ही विल बी कमिंग विद न्यू प्लान्स टू ग्रो आईपीओ, टू ग्रो लेट्स कट मोर. सो आई होप आपको मेरा ये लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा लगा होगा.
अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए और नए-नए टॉपिक चाहिए या स्टॉक मार्केट के ऊपर भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड डेफिनिटली सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया लाइव स्ट्रीमिंग का, तो आपको कैसा लगा? थैंक यू वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। टेक केयर, गुड नाइट।